निश्चय स्वरूप की दृष्टि पूर्वक चारित्र हुआ है तो निश्चय चारित्र वितरागता है, और राग आया उसको व्यवहार चारित्र का आरोप देकर व्यवहार चारित्र का, राग को व्यवहार चारित्र का सुनता है भाई। બહારના ભવકામાં મરી ગયો દેહ ને પૈસા નાનું જોડે નથી પૈસા રેખો છે, પૈસા ઘણા છે ક્યાં રહેશે? આ કરોડપતિ હાલે કે જો હમણાં હસુભાઈ હું કહેતો હતો કે પૈસા વાળા 6 કરોડ છે, એક એક ને 6 ભાઈઓને એક એક ને કઈ કઈ કરોડ છે એમ કહેતો, એના બાપના જુદા 50 લાખ ગુજરી ગયા વારસામાં. હવે 22 લાખ સરકારને ભરવા પડ્યા, એના બાપના પૈસામાં 22 લાખ ભરવા પડ્યા. હું કહેતો દરેકમાં 1 કરોડ છે કે એમ કહેતો હતો. આપણે ક્યાં ગણવા પણ બધાને પ્રેમો છે નહીં. આ તો મરતા મરતા બચી જાય. છેલ્લી એવી સ્થિતિ હતી, ઘા વાગે છે, મારી નાખે, કટકા થાય, કામ થાય. છેલ્લે હું જો ત્યારે ગયા અને મંગળ સંભળાય પછી એકદમ ફરી ગયા જુદો તો કરવાનું હોય ને કરી સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ. પૈસા તો કરોડો હતા ને હું ધૂળ કરી જા પૈસા જા. हाँ तो एन कहना है कि मोक्ष मार्ग नो निमित्त राग को निमित्त कहने में आया. निमित्त कोई करते नहीं, निमित्त इसको कहिए कि निमित्त शुद्ध को करते नहीं, निश्चय को करे तो निमित्त रहते नहीं. समझ में आया? आ तो वितराग भारत बापा જૈન દર્શનથી કોઈ અલૌકિક ચીજ લોકોને સાંભળવા મળી નથી. બહારના ખરા ખોટા વ્યવહાર કરો, આ કરો આ કરો, વ્રત પાળો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો. हाँ तो कहते हैं संतो से प्रभु ये पूजा में भी हम ये वाणी की क्रिया जड़ की क्रिया होती है, तेरे से नहीं. हाँ 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 અને हाथ आम चलता है तो क्रियावती शक्ति के कारण ये परमाणु में गति होने का ऐसा, परमाणु के कारण परमाणु की क्रियावती शक्ति के कारण ऐसा होता है, तेरे से नहीं. विराग वितराग 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 मार्ग को अनुभूति के भाई. वितरागी प्रभु आत्मा उसका जिसको दृष्टि में आया, अनुभव में आया, प्रतीत में आया, उसको जो वैराग उत्पन्न होता है देवगुरु शास्त्री भक्ति व्रत का विकल्प, उसको व्यवहार धर्म का आरोप करते हैं. समझ में आया? यहाँ तो क्या है कि निश्चय जी आत्मा स्वरूप शुद्ध उसका अनुभव निश्चय संकित, तो राग को व्यवहार संकित, तो राग तो चारित्र का दोष है, इसको व्यवहार संकित है ना. ये तो अच्छा आ संकित है, इनका सोचर देखी, निमित्त देखी, उपचार से व्यवहार कहने में है. समझ में आया? तो सुरेश भाई આવું જૂનું છે. કેવું અને સાચું નિરૂપણ કે નિશ્ચય, ઉપચાર નિરૂપણ તે व्यवहार. तारा आज व्यवहार धर्म को है तो उपचार भी कहा है, क्योंकि निश्चय धर्म आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है. उसकी पास साथियां राग को सहचर देखी, निमित्त देखी, उपचार से व्यवहार धर्म का आरोप कहने में आया है. બહુ ખુલ્લા મોક્ષમાં પ્રકાશ. હવે એને માનતા નથી,
કેટલાક વિદ્યાસાગર ત્યારે નીકળ્યો છે કે નહીં, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશનું નહીં, બનારસીદાસનું નહીં, સમયસાર નાટક નહીં, કારણ કે પોગળ ખુલી જાય એટલે શાસ્ત્રમાં ગંભીર વાત ટૂંકી કરી હોય અને સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું કે નહીં, એ ગ્રસ્તોમાં કરેલા નહીં, અમે તો મોટા સાધુ છે ને, હરી હજી બાપા તમે હા હા તારી ક્રિયાકાંડ દેખીને તને એમ થઈ જાય કે હા એ તો બધી રાગની મંદની ક્રિયાઓ છે, એ બધો અધર્મ હે. હા હા બહુ મોક્ષમાં પ્રકાશ, આખો મોક્ષમાં પ્રકાશ તત્વને સ્પષ્ટ કરીને પૂર્ણ મનજી 20 પંથી માને નહીં, કારણ કે પોગળ એમ ખુલી જાય એમ કારણ કે 20 પંથીને તો દેવદેવલા માનવા, આ તો દેવદેવલાને માને તો મિથ્યા દૃષ્ટિ કહે પદ્માવતી ભલાને વતી ઠીકડા. ત્રણ લોકનો નાથ દેવ अत्यंत देव न आयो, दोपहर को अत्यंत देव तो तू है, तेरा देव की मानता करने से अनुभव में प्रतीत होता ही संकित, और भगवान देव की श्रद्धा ये राग, परमात्मा की श्रद्धा का भाव ये राग, आ परमात्मा का अनुभवनी प्रतीति के सम्यक दर्शन के अराग. हा 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 यहाँ क्या क्या देखो 10वीं है इच्छा परिग्रह है, देखो 10 से 10 टीका ने पहले नहीं. हाँ पाठ ये बोले अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो मानी मारी से दम धर्म शब्द पण व्यवहार धर्म, એ સંકેતી વ્યવહાર ધર્મના ઈચ્છતો નથી એમ છે કે નહીં. અપરિગો અનિચ્છો બની માનીય નિચયડી ધમમ, અપરિગો ધમસ જાણવો હોય તો પુણ્યનો વ્યવહાર ધર્મનો જાણનાર છે, સંકેતી વ્યવહાર ધર્મનો જાણનાર છે, વ્યવહાર ધર્મ ઈચ્છતો નથી ને વ્યવહાર ધર્મ મારો માનતો નથી. હા 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 આવી વાત છે. આ તો ભગવાનના પેટ છે, પરમાત્માને આ કેવું ભાઈ રણલોકના નાથનો આ અભિપ્રાય છે. પોતાના બચાવ માટે ગડબડ કરવી એમ હાલે ભાઈ, ભગવાનની ગાદીએ બેસી અને વાતો ઊંધી કરવી. આ કે છે અનિચ્છક હાય પરિગ્રહી નીચે નહીં પુણ્ય ઈચ્છા જ્ઞાની ક્યાંય ખુલાસો કે નાખ્યા. જયસનાચાર્ય ટીકામાં પુણ્ય કીધું એટલે કાંઈ પુણ્ય પાઠમાં બની દીધો એટલે કોઈ કે જ્ઞાન કેમ પુણ્ય પણ એને પુણ્ય કીધું છે નહીં, અહીં પુણ્યની જ વાત છે. ईश्वर में परिग्रह पुण्य का वो पुण्य का विनायक रहे. હા 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 હવે આવા ક્યાં નવરા ફુરસદ, આ તો જે માથે બેઠો હોય કે હા હાલ નીકળ્યા. હે એનું ઊંધું માનવું નથી, આ માનેલું હતા. જુવાની અને ગાંકડા ગીર્યા નો એવું હતા અને આ સત સાંભળે તો હે માને, કારણ ઊંધા લાકડા ગીર્યા નથી અને વર્ત થઈ ગયા તો ઊંધા લાકડા ગીર્યા ત્યાં રાખવું પડે. સુરેશભાઈ આવા સુરેશભાઈ જુવાન નથી. હા હા
આત્મા જુવાન ક્યારે કહેવાય? શરીરની જુવાન અવસ્થા તો જડ नहीं है। राग को अपना माने ही बालक है, अज्ञानी है, और राग से व्यवहार से भिन्न मेरी चीज उसका माने ही युवान अंतरात्मा है। और क्यों ज्ञान होता है? वृद्ध आत्मा है। वहां तो बाल हमको जब मती क्यों रहता है? आत्मा में बाल युवान में वृद्धावस्था क्या है? राग ने किया तो अपने माने धर्म, ये मिथ्या दृष्टि बालक है। और राग से मेरी चीज भिन्न है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। राग धर्म नहीं, राग पुण्य है, विकार है, उससे मेरी चीज भिन्न है, अंतरात्मा अर्थान ये पुण्य परिणाम ने कर्म की से भिन्न अंतर में रहा है। पुण्य में एकाकार नहीं, कर्म में एकाकार नहीं। ये पुण्यना परिणाम से अंतरात्मा अंदर भिन्न है। कर्मनी मध्यमा पीढ़ो भगवान अंतरात्मा भिन्न है। इसका दृष्टि न अनुभव करे ये युवान है, ये आत्मा में युवान है। और अंतर में एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्रकट करे ये वृद्ध आत्मा है। कांति भाई आई बात हो सकता है। कांति भाई वो कौन है? मप्पा भाई भी मप्पा भाई आया આવું કે હો બાપા સરસ્વારી સદાય શંકર લોકોને સાંભળવા મળે નહીં, ઊંધું લાગે. શું થાય ભાઈ? એ તને લાભદાયક નથી તેનો નિષેધ કરે. ये तारा इतनी मची बात है। व्यवहार क्रिया लाभदायक नहीं, राग से नुकसान करता है। ये मज तने लाभनी बात ने कह इच्छा ये परिग्रह, टीका उसको परिग्रह नहीं है जिसको के जिसको इच्छा नहीं। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। वन्य इच्छा करवी, पदार्थ ने इच्छा करवी, तो अज्ञान भाव है कहता। और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता। निजराधिकार है ना, धर्मी जीव को अज्ञान भाव नहीं होता। अर्थात कर की इच्छा का परिग्रह उसके है नहीं। उन भाव की भी इच्छा इसको नहीं है। ज्ञानी के ज्ञानमयी भाव होता है, धर्मी को धर्ममयी भाव होता है। रागी ज्ञानमय नहीं है तो अज्ञान है। पार्वती का अनुसार शुभ शुभ भाव दो तो अज्ञान है, इसमें ज्ञान स्वरूप का कोई अंश ही नहीं। तो यहाँ कहते ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होता है, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। राग अज्ञान है, मय भाव उसको नहीं है। इसलिए अज्ञानमय भाव इच्छा के अभाव होने से अज्ञानमय भाव એટલે इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता। धर्म शब्द शुभ भाव, धर्म शब्द शुभ उपयोग, शुभ राग, दया दान व्रत भक्ति का राग, इसको धर्म इससे नहीं। समझ में आया? हम जैसा न किसो गए मेरू भी मंगत याद होगा तुम्हारा दूर मना
ઈચ્છા કે અભાવના છે જ્ઞાની ધર્મના વ્યવહાર ધર્મ કો એટલે પુણ્ય કો એટલે શુભ ઉપયોગ को नहीं चाहता। हाँ 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 होता है पर चाहता नहीं, जानने वाला रहता है। इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी धर्म नाम पुण्य नाम शुभ उपयोग को नहीं चाहता। हाँ 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 इसमें ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं, धर्म का परिग्रह नहीं हुआ क्यों कि शुभ उपयोग भी धर्म व्यवहार से कहने में आया, उसका पकड़ नहीं, ये मेरा ऐसा मानते नहीं। हाँ 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 કેટલો શ્લોક સ્પષ્ટ છે। પ્રભુ પણ પ્રભુના આગળ પકડીને બેઠા છે। धर्म को नहीं चाहता। अरे धर्मी धर्म ने न चाहे क्या धर्म? व्यवहार धर्म के पुण्य शुभ उपयोग એને આરોપિત ધર્મ કહેકર એવા આરોપિત ધર્મને ધર્મી नहीं चाहता। समझ में आया? इच्छा के अभाव होने से धर्मी धर्म को नहीं चाहता। तो धर्मी धर्म को नहीं चाहता, क्या धर्म? शुभ उपयोग। अरे अनंत काल की एक मिनट पहला बेचारा पानी नहीं खबर नहीं है मुर्गी। पानी को पूछ क्या तो 1 मिनट में ही पूछ सकता हूँ पानी में हटो नो। हाँ बंद छूटो 1 मिनट 1 फुट 2 मिनट 8 महीने तो 8 फुट ऊंचो वाली होता थी बूढ़ी क्या मानस। ये वक्त है मैंने शरीर ने मारू मैंने जीववा तो तड़पड़िया माने तो हूँ एक आत्मा छू। मारू जीवन क्या परने लईने नहीं, भले दे छूटी जाए भले बूढ़ी जाए दे, હું ક્યાં બોલું છું? હું તો ભગવાન આત્મા ભગવત સ્વરૂપ। એ મારી ચીજમાં હું તો બિરાજતો હું। બિરાજનામાં તો શોભા, મારી શોભા तो मेरा ना रहना ही मेरी शोभा है। राग आता है पर इससे नहीं, इसमें ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं लो तो क्या धर्म या पुण्य राग शुभ उपयोग। ये ज्ञानी शुभ उपयोग को परिग्रह नहीं, शुभ उपयोग मेरा ऐसा ही मानते नहीं। ज्ञान में ये ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ત્યારે કેમ એક જ્ઞાનમય જ્ઞાયક ભાવ में वर्तमान पर्याय में ज्ञायक भाव का भान है। एक ज्ञायक भाव में ज्ञायक भाव तो स्वीकार्य है, हूँ पर्याय में भान हुआ कर मैं ज्ञायक भाव हूँ है ना। एक ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के श्रद्धा कारण धर्म का केवल ज्ञायक है। पुण्य संकेती जानना रहे पुण्य अपना मानने का वाला है विशिष्ट।